आप लोगों को वही वाला है, वो पीएससी सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना करके वो अभी आया लेटेस्ट जजमेंट. It will be done from prelims, your lordship, the platoon commander formula. वो ठीक है, वो देखेंगे. तो मेंस का एग्जाम का पॉइंट हो जाएगा, मेंस के मार्क्स देना जरूरी नहीं है जजमेंट पे 28 क्या चीज? मेंस के एग्जामिनेशन पे मार्क डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है. हाँ वो तो ठीक है, वो तो जब तक वो तो सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी उसमें. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है. But रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ओके, ओनली 30%. in some cases, कि रूल्स को हम अपने मन से वायलेट नहीं कर सकते, जो भी कोर्ट ऑर्डर हम कर लेंगे. दिस कोर्ट विल डू, दिस कोर्ट विल डू. यस, but some Milots, mine is serial number 28 and 55, Milots. Milots, this pertains to Milots ex-servicemen, Milots, which has whatever has happened after mains examination, Milots. Yes. There has been a discussion, Milots, about this, but Milots have to say something about this. Yes. Kindly, with your permission, Milots. Milots, here when the advertisement was issued, Milots, there, Milots, 10% of reservation has been given to ex-servicemen. Yes. And Milots, nowhere in the advertisement it was specified that so many and so many seats were to be filled by SC, ST, OBC. It was not divided like that, Milots. Yeah. What is happening, Milots? Taking their stand, Milots, which is, Milots, as per the reservation in Chhattisgarh, Milots, in the state of Chhattisgarh, Milots, which is 42% of unreserved, 12% of SC, 32% of ST, and 14% of OBC. What is happening, Milots? If we are dividing, Milots, the total posts, Milord, of Milots, 10% of total post would come as 97, Milots. 2 posts are remaining vacant, Milots. And those two posts are not being filled, Milots. It has not been considered, Milots. Yes. No one has been considered. Thereafter, Milots, there is a stand of the state, Milots, that the compartment-wise reservation means that SC, ST, OBC, and unreserved candidates only. Milots, nowhere in the rules that your lordships have seen, Milots, which is your lordships, the Chhattisgarh ex-servicemen reservation of vacancies in the state civil service and post class 3 and class 4 rules of 1985. Nowhere in the rules, Milots, the word compartment wise is explained, Milots. But in other rules, Milots, such as the reservation given to the female, Milots, the word compartment wise is specifically, Milots, explained there, which talks about SC, ST, OBC, and unreserved in the cases of reservation, horizontal reservation given to women, Milots. But in the case of ex-servicemen, Milots, my point is, Milots, that the intent behind this special legislature, Milots, these are special reservations, Milots, given under Article 16(1), Milots, so that the ex-servicemen who have been, Milots, in order to promote their rehabilitation, Milots, and reintegration to the civilian life, Milots, and to recognize their contribution to the nation's defense and to support the contributions made by the veteran, Milots. So therefore, Milots, as per 16(1), Milots, this is to ensure equality of opportunity for ex-servicemen in the matters relating to employment or appointment to any office under the state, Milots. Any judgment on this point? Milots, I could find one judgment, Milots, which I have annexed, Milots, in my writ petition. Yes. This is, Milots, annexure P10 of writ petition number 4166 of 2023, Milots. This is Shiv Shankar Singh versus Public Service Commission, UP Allahabad, Milots. Although, Milots, I totally accept that it is a different state, Milots, different rules will follow. But the thing to be, Milots, seen here is that similar provision of SC, ST, OBC was there in the state of Allahabad, Milots. But, Milots, the honorable courts have, Milord, constructively, Milots, given a reading of the provision, Milots. I may be allowed to read it, Milots, one paragraph. As the reservation in favor of ex-servicemen
falls under Article 16.1, Article 16.4 of the Constitution is not applicable to it. This is what we were discussing, my lords. Vertical reservation and horizontal reservation, my lords. To uplift the social is, my lords, 16.4, which is vertical reservation, my lords. But horizontal reservation, my lords, here in Chhattisgarh, my lords, it is given to veterans, my lords, children of veterans, my lords, to the women, my lords, to the Divyangjans, my lords, and every reservation has different set of rules altogether, my lords. Therefore, my lords, the meaning of compartment wise is not at all, my lords, similar, my lords, in all such rules. I may kindly be allowed to read further, my lords. Considerations and the basis of reservation under Article 16.1 being different from what is contained in Article 16.4, posts reserved for ex-servicemen cannot be distributed, divided, or allocated on the basis of the caste of the ex-serviceman. Dividing vacancies reserved for ex-servicemen and allocating them to scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, and general candidates is therefore without jurisdiction. All ex-servicemen who applied against their reserved quota have to be treated. My lords, I'll read it again, my lords. All ex-servicemen who applied against their reserved quota have to be treated as persons belonging to the one and the same class, and all of them are to be considered against all the vacancies reserved for them, strictly on the basis of the merit, irrespective of the caste or class to which they belong. Whether it is Here, my lords, Supreme when the Court or- advertisement was issued, my आपने lords, कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट का है? Allahabad High Court, my lords. Whether this order has been challenged before the Supreme Court? My lords, no, my lords. As per the best of my knowledge, it is not, my lords. My lords, thereafter, my lords, in the rules, the advertisement which the responding state has issued, my lords, it is governed by the rules of 2021. That rules, my lords, have annexed gazette notification. Yes. It is their rules, my lords. It defines, my lords, if we see the advertisement, the Hindi writing is ki, my lords, I may be given a moment, my lords, I'll read it for your lordships. Yes, yes. समझते हैं प्रभागवार होगा हाँ वही तो है. सम स्तर और प्रभागवार, my lords. 10% सम स्तर और प्रभागवार. That प्रभागवार, my lords, that प्रभागवार, my lords, it is already defined for ex-servicemen in the rules of 2021, my lords. That category itself is defined, my lords. It is at page number 59 of my writ petition, my lords. My lords. I apologize, my lords. It is at page number 62, my lords. Oh yes, read it. ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो. स्पष्टीकरण, दिस इज इंपॉर्टेंट, my lords. शब्द भूतपूर्व सैनिक से घोतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो, जहां तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो, तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक 3 वर्ष की पूर्व मितव्यतिता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई हो, अथवा जिसके अधिशेष घोषित किया गया हो, अर्थात इसके बाद में लॉर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन इज गिवन, my lords. Now, my lords, to substantiate, my lords, what I am arguing, my lords, in the same rules of 1985, there is the rule 6A, my lords. Very important, my lords. It says lower standard for selection. My lords, compartment wise अलग अलग विभाग में अलग अलग कैटेगरी, किसी कोई टेक्निकल किसी के पास में क्वालिफिकेशन है, किसी के पास में नहीं है, वो जो भी कैटेगरी से आ रहा है उसके हिसाब से, my lords, लोअर स्टैंडर्ड फॉर सिलेक्शन ये एक रूल बनाया है इसी 1985 में कि इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स belonging to ex-servicemen are not available, basis of the general standard to fill all the vacancies reserved for them, candidates belonging to the
category of ex-servicemen may be selected under a relaxed standard of selection to make up the deficiency in the reserved quota. My lords, candidates belonging to the category of ex-servicemen may be selected under a relaxed standard of selection to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the condition that such relaxation will not affect the level of performance by such candidate. If there is not a my lords, if there is no technical candidate, my lords, available, then the other unreserved, my lords, which is not belonging to the same category but is an ex-serviceman, will be considered, my lords. This is your submission. This is my submission, my lords. And my lords, another thing, my lords, lastly, even if they say, my lords, this is a twofold submission, my lords, I am hesitant to say it, my lords, but it is, my lords, important at this point, my lords, because, my lords, they are saying that total of 154 posts of ex-servicemen lies vacant. This has also come in one of our honorable court's orders, my lords. Yes. 154 posts are lying vacant. This was their submission. This was their statement, my lords, given before this honorable court. Now, my lords, those 154 posts, my lords, posts which are for reserved for horizontal reservation, my lords, it is not carried forward, my lords. There are no backlog posts for ex-servicemen. There is never. So, my lords, what will happen to those posts, my lords? Your lordships, even if they go by their contention and they go on to divide the ex-serviceman class into SC, ST, OBC, and so on and so forth, my lords, unreserved, then, my lords, what is going to happen? That 154 posts, as per their submission, they should fill it with other SC, ST, and OBC and unreserved candidates, my lords, who are not belonging to ex-serviceman category. Either they should abide by the rule of 6A, which says that, okay, if posts are lying vacant, you have to take unreserved ex-servicemen or ex-servicemen from the category defined as per the rules of 2021 Gazette notification, my lords. Correct. Either you do this, either you take other candidates, either, my lords, both if they meet any one of the conditions, my lords, so many candidates who will have the same number, my lords. The last candidate rule, that rule, my lords, which has already been discussed by the seniors, my lords, that the similar candidate who has the same number, that last candidate will also have to be considered, even if it exceeds the amount of 5%, 5 times. Yes. Such many candidates may be, my lords, considered, my lords. I think argument heard. Yes. Milord, in some cases, Milord, incident 1, 3, and 25, 14, and 65, and 73, I am an intervener. Yes. Milord. And in some cases, Milord, from 113 to rest, Milord, I am the petitioner. Yes. One thing I have to submit, Milord, because the first thing, Milord, everybody is discuss about the 370 of that 30% reservation of the man and the women quota, and the learned advocate general submitted, Milord. I prepare a simple notes, Milord. This is one of the compilation. Milord, एक मिनट. Milord, इसमें जो सबसे फर्स्ट जो निकले, जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट निकली है, वो टोटल है, just for a record, Milord. हाँ, जल्दी से बताइए. The first advertisement which was issued in 2018, Milord, 24/8/2018, that is 655. उसमें भी incorporate किया है. Milord, उसके बाद जो टोटल फॉर्म फिल किए गए वो है 148,858 और रूल्स, मिलोट, जो है छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स, विच इज वेरी रिलेवेंट, मिलोट, दैट इज 10(3)(6). अब इनका ये कहना है कि रिजर्वेशन जो है महिला का वो अलग से होगा, लेकिन जो रूल्स है, मिलोट, रूल्स एक बार देखेंगे. This is a copy of code. Yes. Yeah. This is honorable code copy. Yes, तो है ना. तो मेरी कॉपी है. इनकी दे दो. पंडित वो है कॉपी में. हाँ. मेरे से फ्लैग डी है, मेलोट.
You are supporting the case or we? I am supporting the case of state ballot. Then why are you making some एक चीज है बस उसमें बता उसमें एक ही चीज है जो इम्पोर्टेंट है जिसको किसी ने आर्गुमेंट नहीं किया, Yeah. बाकी आई विल हाँ, जस्ट बताइए। सब रूल 6 का सब क्लॉज 3 बलट, Yes. 6 का 10 पेज नंबर 10(3). पेज नंबर 39। Yes. अब पहले प्रीलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन होगा। हम्म। अब इनका ये कहना है कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो 247 जो पोस्ट है उसके लिए मिला जाए। अब उसके लिए रूल जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने फॉर्म भरा, एक एग्जांपल मिलो, जस्ट यही इसी पॉइंट पे किसी ने एड्रेस लिखा, बाकी सब पॉइंट पे एड्रेस है, जस्ट एग्जांपल। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म किसी एक का। अब मान लीजिए ये महिला ही है, मेरे पास अभी है लेकिन महिलाओं का भी है। अब इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या दिया? सूबेदार, दूसरा दिया सब इंस्पेक्टर, तीसरा दिया सब इंस्पेक्टर स्पेशल और चौथा प्लाटून कमांडर। अब ये महिला होती तो प्लाटून कमांडर नहीं देती, लेकिन ये तीनों तो इन्होंने दिया। अभी वो रहेंगे, यहाँ तक तो है। अब इन्होंने फॉर्म भरा, प्लाटून कमांडर के अलग से तो कोई एडवर्टाइजमेंट निकला नहीं, इसी एडवर्टाइजमेंट में प्लाटून कमांडर रहेंगे। अब उसके लिए रूल 10 सब क्लॉज 8 का सब क्लॉज 3 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब उसका मेन रिटर्न एग्जामिनेशन, अब इसमें किसी ने ना एड्रेस किया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि महिला शुरू से लेके लास्ट तक जाएंगी सेलेक्ट लिस्ट तक। बाद में जब सेलेक्ट लिस्ट निकलेगी तब प्लाटून कमांडर की पोस्ट अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूल में जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन देना है, इनका रूल है 97 का स्टेट का रूल है। मतलब आई फाइल टू डेट, मतलब ये रूल जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध नियम 1997। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? में राज्य के अधीन की जाने वाली सीधी भर्ती में महिलाओं के पक्ष में समस्त पदों पे एंटायर मतलब 951 जो पद है, समस्त पदों के 30% पद को आरक्षित रखने तथा उक्त आरक्षण हॉरिजॉन्टल कंपार्ट वाइज रखने का प्रावधान। It means your advertisement is against the rule। मैं इसी में क्वेश्चन कर देता हूँ। नहीं पूरा सिलेक्शन वैसा नहीं बोल रहा हूँ, पूरा मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन। अब इसमें 30% देना है, तो अब अब महिलाएं वहां कैसे जाएंगी? तो मेन रिटर्न एग्जामिनेशन बैलेट अब देखेंगे उसमें जो पूरा एडवर्टाइजमेंट क्रैश कर दूंगा मैं, पूरा चला जाएगा। पूरा क्रैश कर दूंगा। मैं बस दो चीज बता देता हूँ उसको, मत बोलिए, पूरा क्रैश कर दूंगा। अब उसमें मैं 200 मार्क है। मिस्टर वानखेड़े, आई टेल यू from the very first day I was aware of these rules। Reservation rule 1997 I was aware। ठीक है, देखिए हमको भी देखिए, अगर 30% लोगों को बढ़ाते हैं, इंटरव्यू कॉल करते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। यस यस, अगर हम इनके सबमिशन मांगते हैं प्लाटून कमांडर अलग लिस्ट बना देंगे मेरिट वाइज, तो भी ऊपर वाले ही आ जाएंगे। जो अगर हाँ क्या कर रहे हैं? आर्गुमेंट दोनों देखिए इनका नंबर ही नहीं आएगा, जो ना है ना, कोई ना है। कारण पता कारण See what they have raised, they have raised grievances before the court and court is bound to address them and address them। Yes, this is the, that's why we are here। बाकी ये बोल रहा हूँ जैसे 3 लिस्ट बननी है, हो गया, आर्गुमेंट क्लोज, खत्म करो। 2024 का जजमेंट क्रूशियल पॉइंट जो आपने अभी बोला था तेलंगाना वाला, हमारा टाइम हो गया 4:30 का। लॉर्डशिप अलग पोस्ट बन जाता तो उसका कारण Yes, close। Lordship, one point prepare some judgment and honorable court has sought one query, Lordship, with regard to application form, Lordship. My friend has this. किसी फाइल में लग गई है पता नहीं। Lordship, the other council has presented one situation where if the candidate fills form other than platoon commander, then his application will be accepted। Now, one case, Lordship, this is the case, Lordship, where a candidate, if she fills a form choosing platoon commander, Lordship, then automatically the website generated by the police department will automatically rejects it। ऊपर में एक caution आएगा, my lord can observe, ये जैसे फीमेल डालेंगे वो ऊपर caution आ जाएगा, they cannot proceed further। आप बताएं, अब रुकिए, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है? आर्मी में भी को अलाउ करना है वुमेन्स को। लॉर्डशिप,
सुनो तो सही। लॉर्डशिप। तो प्लाटून कमांडर कोर्स ही बड़ी बात है, अभी वाला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिफर कर दे, पूरा विज्ञापन पेश कर लॉर्डशिप, देते। my submission would be याद रखना। कितने फॉर्म आएंगे लॉर्डशिप, कितने फॉर्म आएंगे, दिस इज द इनिशियल स्टेज। अरे हो गया भाई, अब और जिनको नौकरी मिलना है उनको मिलने दो। we are supporting the state lordship, we are for interveners. Don't allow me to apply my Lord- mind in a different direction, please. Let me confine to what you people have argued. Otherwise, if I will cross my limit to thinking over it, it will be difficult for everybody. कोई report हमारा। All right, argument heard, deserve. Yes, Mr. Bharat, argument heard, deserve. अब कुछ नहीं इस केस में। चलिए खत्म तो हुआ, एक आइटम बहुत दिन से पेंडिंग था। फॉलो करके अपॉइंटमेंट करता हाँ भाई, जिसको नौकरी देखिए, हमारा इंटरेस्ट बस इसमें नौकरी ये लेना है। ये डिसाइड हो जाए बस, this way, बस। that way, जो भी यस सर, हम लोग चाहते भी है भाई नौकरी को। तो देखिए अब जिस क्योंकि को अब तो सेलेक्टेड के लिए, अब क्या हो गया, अगला रिक्रूटमेंट भी आ गया है, हाँ इसके कारण वो रुक गया है। नहीं नहीं वो 11 के बाद से रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं, सही बात है भाई, यूथ का जीवन एक एक दिन खराब होता है, तकलीफ होती है। नहीं वो- That's why we have taken this matter only today, or no other matter have been taken today. Argument had reserved. Yes, खत्म करो। आप लोग रिटर्न सिनॉप्सिस दे दीजिएगा, तैयार हो गया, रिटर्न सिनॉप्सिस दे दीजिएगा सबको। है अच्छा, पास